Hi guys, a very good evening to all of you. I hope the last two lectures, that means the four videos taken in the first two lectures, you all were clear with the concept. If not, as I told you, keep on seeing the videos, you all have sufficient time. We are not going live, so you have a complete backup. See as many times you want till the time you don't understand. Okay, now let's continue for today. Now, last time I told you, last 2 days, that the subject what you all are going to study in FYGC and SYGC is bookkeeping and accountancy. Last 2 days we saw the meaning and introduction of the first part, that is bookkeeping. Now today we take the second part, that is accountancy. Last time I gave you the hint that accountancy follows bookkeeping. Bookkeeping comes first. Bookkeeping पहले आता है. After that, accountancy comes. If there is no bookkeeping, there is no point of accountancy. So if you see, both are interrelated. First bookkeeping comes and then comes accountancy. Without bookkeeping, accountancy does not have any value. So first, let's understand the basic meaning of accountancy, and then if you see on page number 3, there is distinction between bookkeeping and accountancy. What is the major difference between bookkeeping and accountancy? That we will see today. We'll discuss this page, then we'll go to the next page, and if possible, I'll try to finish page number 3 and 4 today, so that next time we can focus on page number 5, where the main part of accountancy starts. As I told you, remember, first 3-4 days will go in basic explanation of the meaning of the subject. So hopefully today we should be able to do. If not, then little part I'll continue next time and I'll get into the main part. Okay? First, let's see accountancy. Again, I'm repeating. Accountancy follows bookkeeping. Bookkeeping comes first and then comes accountancy. Let's see the first paragraph and then I'll make you explain what is the meaning of that. Accountancy ka meaning and definition. Accounting is a broader concept than the concept of bookkeeping. As I told you, it follows. So it is a wider concept. Bookkeeping is important. Without that, accountancy can't come. But once bookkeeping is out and accountancy comes, accountancy has more importance than bookkeeping. How? It refers to the process of summarizing and analyzing the business transaction and interpreting the effects of those transactions on the business. Matlab, how you come to conclusions. I'll give you examples. Accounting is defined as an art of recording, classifying and summarizing the business transaction, balancing of accounts, drawing conclusion, that is giving your conclusions, and interpreting the results thereof. Okay? Now see, if you read the definition, again you will face a problem. Forget it. I'll explain you in the form of example. Last 2 days what I told you, this is your books of accounts. यहाँ पे you are recording the things as and when you do. You incur a transaction, you record. Do another transaction, record. As and when you keep on doing transaction in business, you keep on recording that. Correct? That is bookkeeping. Now accountancy में क्या होगा? Whatever I am explaining you ना, आगे जो distinction है ना, few points of distinction itself will get covered in what I am going to explain you for the next 5 to 7 minutes. Okay? Now see, bookkeeping है books of accounts. याद है last time I told you, first page पे cash account है, second page पे purchase account है, sales account है, staff salary account है, electricity account है. Every page has a different detail of one particular thing. That was your books of accounts. Now accountancy में क्या होता है? सबसे पहले accountancy के लिए there should be a book. Because अगर bookkeeping नहीं है, accountancy होगा नहीं. Now what will happen? Accountancy is a wider concept, a bigger concept than bookkeeping. Whatever I record in my books of accounts, whatever I record, that data I pick up to do further analysis. That data I pick up to do further analysis. That means, यहाँ पे मैंने लिखा, suppose मेरा 5 पेज का परचेस है. Every day what I purchase I keep on recording. Accountancy में क्या होता है? Accountancy is not bothered. तुमने दिन में परचेस 10 बार किया, तुम्हारा 10 परचेस का अमाउंट इंडिविजुअल कितना, आई एम नॉट कंसर्न, आई वांट द टोटल. So whatever I record purchase on a daily basis,
अकाउंटेंसी में मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे टोटल चाहिए. Whatever I sell on a daily basis, I keep on recording the sales. मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे टोटल चाहिए. So whatever I record in my books, उसका summary I need for accounts. Bookkeeping में I record on a day-to-day basis. हर एक ट्रांजैक्शन को मैं रिकॉर्ड करता हूँ. अकाउंटेंसी में मुझे हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल नहीं चाहिए, टोटल कितना हो मुझे वो चाहिए. एग्जाम्पल, मैंने परचेस किया, फर्स्ट डे मैंने 2 लाख का परचेस किया, सेकेंड डे 1 लाख का किया, थर्ड डे अगेन 50,000. अकाउंटेंसी में आई डोंट वांट तुमने पर डे कितना परचेस किया, पूरे मंथ में कितना परचेस किया, 10 लाख, ठीक है, आई एम कंसर्न विद दैट 10 lakhs. दैट इज द मीनिंग. यू सेल गुड्स डेली थ्रू आउट द मंथ. मैंने एक दिन पे एक्स अमाउंट का सेल किया. अकाउंटेंसी सेल्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज द जॉब ऑफ बुक कीपिंग. मुझे ये बताओ कि पूरे मंथ का सेल कितना हुआ. सो वी नीड द टोटल फिगर्स. ब्रेकअप हमें नहीं चाहिए. दैट ऑल इज टेकिंग केयर ऑफ while doing bookkeeping. Now if you see drawing conclusions, balancing account and interpreting the results, that means what? अभी जैसे अकाउंट है, ये मेरा कैश अकाउंट है, मैंने कैश लिखा, लेकिन मैंने रिकॉर्ड सब कुछ किया, बट एज एन अकाउंटेंट आई वांट टू नो व्हाट इज द कैश बैलेंस. तो मैं क्या करूंगा, उसको बैलेंस करूंगा. बैलेंस कैसे करते? यू हैव अ सेपरेट चैप्टर कॉल्ड एज लेजर. I'll just give you a brush up. During the month मेरे पास 10 लाख रुपया कैश आया. वही सेम मंथ में मैंने 9 लाख रुपीज पे किया. सो 10 lakhs आया, 9 lakhs गया, बचा कितना? 1 lakh. That is called as balancing. Balancing मतलब finding out what is the balance of one particular account. Suppose मेरा बैंक अकाउंट है, मंथ में मेरे को 5 lakhs के चेक आए, उसके सामने मैंने 4 lakhs का पेमेंट किया. दैट मीन्स बचा कितना? 1 lakh. सो अकाउंटेंसी नीड्स बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट. बुक कीपिंग में क्या होता है? 5 लाख का रिसीप्ट रिकॉर्ड किया, 4 लाख का पेमेंट रिकॉर्ड किया, वो हो गया बुक कीपिंग. अकाउंटेंसी बुक कीपिंग से 1 step अहेड. 5 लाख का रिसीप्ट, 4 लाख का पेमेंट, बचा कितना? 1 lakh. सो समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अकाउंटेंसी के लिए पहले बुक कीपिंग होना चाहिए. अगर मैंने 5 लाख और 4 लाख रिकॉर्ड ही नहीं किया, सो फ्रॉम वेयर डू आई गेट दैट 1 lakh? सो दैट इज द पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स. आगे देखो, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स. नाउ आई एक्सप्लेन यू अर्लियर आल्सो, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज व्हाट? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. नाउ हाउ डू आई फाइंड आउट माय प्रॉफिट और लॉस? व्हाट आई डू? आई टेक ऑल द टोटल ऑफ माय इनकम, I take the total of my expense, the difference gives me my profit. So what I do, suppose मेरा पेज नंबर 1 पे परचेस है, I take, okay, परचेस मेरा 10 lakhs, sales 15 lakhs, expenses 2 lakhs. अभी देखो, परचेस मतलब I'll pay 10 lakh का परचेस. I'm just showing you on the board. मैंने परचेस किया 10 lakh का, ठीक है. मैंने एक्सपेंस, सैलरी सब मिला के मेरा एक्सपेंस हुआ समझो टोटल 2 lakhs का. तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 12 lakhs. 12 lakhs is my total expense. Now during the year suppose मैंने गुड्स बेचा 15 lakhs का, ओके. सो इसका मतलब ये, I sold goods of 15 lakhs, 10 lakhs का परचेज किया, 2 lakh का एक्सपेंसेस, मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? माई टोटल मनी स्पेंट इज 12 lakhs एंड मैंने गुड्स कितने का बेचा? 15 lakhs. सो व्हाट आई डिड, 15 lakh का सेल, 12 lakh का कॉस्ट, सो 15 lakh minus 12 lakh, दैट मीन्स आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs. दैट इज द पॉइंट, ड्रॉइंग कंक्लूजन. मतलब बुक कीपिंग में 15 लाख का ब्रेकअप आएगा. आई डोंट नीड अ ब्रेकअप ईयर, मुझे टोटल चाहिए. सेल्स कितना है? 15 लाख, ओके फाइन. परचेस कितना है? 10 lakhs. आई डोंट वांट अ ब्रेकअप. ब्रेकअप इज बुकिंग का पार्ट, इट्स नॉट माय पार्ट. एक्सपेंस कितना है? 2 lakh. आई डोंट वांट टू नो 2 lakh में से फर्स्ट मंथ कितना इनकर किया, सेकंड. टोटल एक्सपेंस क्या है? 2 lakhs. सो माय टोटल कॉस्ट इज 12 lakhs, माय टोटल इनकम इज 15 lakhs. सो 15 lakhs minus 12 lakhs, that means 3 lakh is my profit. So from this data, I conclude that my profit is 3 lakh rupees. That is the meaning of that.
and interpreting the results. That means from this I draw a conclusion that I made a profit of 3 lakhs. This I can compare with my last year. Last year मैंने कितना profit earn किया था, and then you decide whether I should think for a higher target for the next year or how I should go about. So that is the concept of accountancy. It is one step ahead of bookkeeping. It goes more into analysis and helps you taking business decision. Again, I am repeating, इसका कोई भी big question is not going to come in exams. So you have to just understand, and there is no need to ratify. Just understand, you are not going to be asked any question from this, but it can come from objectives. But this is the base of the subject. Now there are few points. If you see 10 points of distinction is given. Let's discuss one by one each point, and then we will see आगे क्या करना है. Distinction. First, meaning. Already I discussed. Bookkeeping records and classifies business transaction. As and when you do the transaction, immediately recorded in the books of accounts. That is bookkeeping. Classifies the transaction मतलब परचेस है तो परचेस में लिखोगे, सेल्स है तो सेल्स में लिखोगे, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में लिखोगे. वो बुककीपिंग का काम है. अकाउंटेंसी समराइजेस एंड एनालाइजेस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. देखो बोर्ड पे है. समराइजेस मतलब व्हाट? परचेस का मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए. टोटल 10 lakhs. मैंने परचेस अकाउंट को समराइज किया, उसमें से आई केम टू नो माय परचेस इज 10 lakhs. मैंने एक्सपेंस को समराइज किया, उसमें से आई केम टू नो माय एक्सपेंस इज 2 lakhs. सेल्स को समराइज किया, ब्रेकअप नहीं चाहिए, I came to know my sales is 15 lakhs for the year. So that is the meaning of that. Accountancy summarizes and analyzes business transaction. ठीक है? Stage. Already I discussed with you. First stage is bookkeeping. Second stage is accountancy. Bookkeeping comes first, then comes accountancy. अगर bookkeeping ही नहीं है तो accountancy आएगा ही नहीं. If you climb a building without lift, suppose 3 माले का बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पहले आएगा, then I climb the first floor, then I climb the second floor. I cannot go straight away from ground floor to second floor without lift वाला बिल्डिंग. So same way, अगर bookkeeping ही नहीं है तो accountancy there is no question at all. So bookkeeping comes first. Bookkeeping precedes accountancy. Accountancy के पहले bookkeeping आता है, and accountancy follows bookkeeping. Bookkeeping के बाद accountancy will come. That is the meaning of that. You can just keep this point in mind जो मैंने explain किया. ज़्यादा deep में there is no need to go. Objective. Bookkeeping aims at recording and providing primary information. Accountancy aims at finding the profit or loss and gives financial position. Same thing. Day to day basis पे record किया, वो मेरा bookkeeping हो गया, and I find out the profit. Example दिया, 15 lakhs का income, 12 lakhs का expense. 15 lakh minus 12 lakhs, that means I made a profit of 3 lakhs. This is the way I find out the profit loss. And as I told you on the very first day, financial position matlab what? Knowing the details of your assets and liabilities. So value of assets, liabilities, profit loss, I come to know when I go one step ahead in accountancy. Bookkeeping में मुझे हर एक asset की value and liability की value पता नहीं चलेगी. First I have to record it, then I have to balance it, and after balancing I get the value of asset and liability. Actually में balance कैसे करने का, that we will study in the 4th chapter, which we'll be doing around the month of October. ठीक है? उसके पहले हम लोग को बहुत stages में पास होना है. That you don't worry, step by step we will go. Next, responsibility. Now किसकी responsibility है? It's very basic. Bookkeeping पहले आता है, accountancy later on. So what I told you, accounting is a very, very broad concept. Accounting is a very, very broad concept. Without bookkeeping, you cannot do accountancy. And once you go in accountancy, accountancy becomes a major part. Accountancy becomes a major star. Therefore, stage wise, if you see, it comes first, this later, but this is more routine. Bookkeeping is more routine. It is like a clerical job. उसपे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है. But accountancy में once the data is there, then you have to apply more brains. Because of that,
bookkeeping is handled by the junior staff and accountancy by the senior staff. Because of that, bookkeeping is handled by the junior staff and accountancy by the senior staff. Practical life में ना याद रखना, मैंने जो फर्स्ट डे बोला था, you all have to study well. एक चीज याद रखना, today the trend, you all are the kids of 21st January, 21st generation, sorry, 21st generation. याद रखना, you all have passed out 10th, 80, 85, 90, 95 यार भूल जाओ अभी, it's history now. अभी तुम लोग कॉलेज में आ गए, FYJC, next year you all will give SYJC. After that you all will do 3 years का डिग्री, side by side you all will go further studies के लिए. Further studies करना, खाली ग्रेजुएशन मतलब BCom, BAc, BMS कुछ वैल्यू नहीं है. You have to study further, get 2 to 3 degrees minimum that is required today. ये मेरी बात जिंदगी भर याद रखना. नेक्स्ट ईयर वेदर यू कम टू मी फॉर ट्यूशन और नो, ये दिमाग में डाल देना, खाली ग्रेजुएशन डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, पता है ना अभी क्या हो रहा है? कोरोना में, कोविड में, ऑल द बिजनेसेस आर शटिंग डाउन, बट दोज हु आर हाईली एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, घर पे बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा है. व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट देमसेल्व्स प्रॉपर्ली एजुकेटेड. सो अगर प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो गए तो सीनियर लेवल पे काम करोगे. अगर खाली ग्रेजुएशन किया, जूनियर लेवल पे करोगे. हमें बुक कीपिंग करना है, बट खाली बुक कीपिंग नहीं करना है. वी हैव टू गो 2 steps अहेड. आगे जाके वी हैव टू डू अकाउंटेंसी एट अ ग्रेटर लेवल. याद रखना व्हाट आई टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट डे. I will not go into books. Sometimes I will give you more practical examples. I am a very practical person. मैं books में नहीं जाता हूँ. What is important in practical life, that matters. याद रखना, my age group people, they did not understand. सब ने टाइम पास किया, लाइफ टाइम मस्ती किया, आज सब पछता रहे. Don't allow that to happen. Whatever rich family you are coming from, keep that in mind. Education is such which you cannot buy from money. आगे जाके डिग्री होगा, कुछ भी कर सकते हो. अगर डिग्री नहीं है, पैसा आज है कल नहीं है, आज नहीं है तो कल आ जाएगा. लेकिन अगर एजुकेशन रहेगा, so at any given point of time you will feel secure, you will feel independent. So keep that in mind. Okay, coming back to, again I repeat, bookkeeping junior level, accountancy senior level. Next देखो, results और outcome. result क्या है? bookkeeping results in journal and ledger, accountancy results in profit and loss and balance sheet. Now what is journal, what is ledger? आगे जाके chapter number 3 is journal and chapter number 4 is ledger. I am not going in detail, I'll give you an example. Journal means day book. ये जो मैं तुमको बताया था ना, that is journal come ledger. I'll tell you how. First I record the transaction. Understand this meaning. बाद में कुछ देखने का जरूरत नहीं. Suppose मैंने goods purchase किया, ठीक है? I told you on the very first day. Double entry, 2 things affected. Goods purchase किया. So what are the 2 things? Purchase, and when I purchase goods, I will pay cash. Money goes out. So cash goes out. So the 2 things which are affected is purchase and cash. So what happens? If you are understand the difference. If you are recording in a journal, it is called as a depot. You will record purchase and cash at one place. Then when I say ledger, ledger is 1 step ahead of journal. Ledger में क्या होगा? Cash you will put it on the page of cash, and purchase you will put it on the page of purchase. I am repeating. Cash you will put it on the page of cash, and purchase you will put it on the page of purchase. Getting it? Again I am repeating. Journal में I record cash and purchase both at one place. फिर यहाँ से सब, यहाँ पे मैंने cash और purchase लिखा, तो यहां से उसको पिकअप करके आई पुट इट इन द कैश अकाउंट, एंड परचेज को यहां से पिकअप करके आई पुट इट इन परचेज अकाउंट. फर्स्ट आई रिकॉर्ड एट वन प्लेस एंड वहां से आई सेंड इट टू द रिस्पेक्टिव प्लेस. कैश होगा तो कैश में जाएगा, परचेज होगा तो परचेज में. सो जो प्लेस एट विच आई रिकॉर्डेड फर्स्ट, इट इज कॉल्ड एज प्राइम बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल, एंड फ्रॉम देयर इट गोज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट, that is called as ledger, secondary books. So journal is the original book where you first record it, and ledger is the book from where it goes from journal to the ledger. Ledger, secondary book,
journal primary book. After 15 days, after 10-15 days, we will be getting into journal and ledger का part. ठीक है? Next, period already discussed. Bookkeeping you have to record on a day-to-day basis. I will record on a daily basis. Accountancy I don't need to do daily basis because bookkeeping ने वो संभाल लिया. एक बार bookkeeping हो गया तो accountancy को bookkeeping के detail में जाने की जरूरत नहीं है. So bookkeeping I do on a day-to-day basis. This I do at the end of period, once in a month, twice in a month, or twice in a year, or at the end of the year. So accountancy is done on a daily basis, but not at a basic level, at a high level. This is done at a basic level every day. This can be done every day. This can be done at the end of the every period, 6 months, 3 months, 4 months, 10 months, 1 year. But iska level is high as it involves more analysis. Hence, this is a daily routine and this is not a routine. Whenever it is done, it has to be done very cautiously. You have to be very perfect with this because your company ka profit loss you will come to know only when you do accountancy part correctly. And accountancy part you cannot do correctly till the time bookkeeping बराबर नहीं है. So दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते. Okay, keep that in mind. Next, scope. As I told you, this is routine, so this has got limited scope. This is advanced, so it has got more understanding, more levels of skill required. Therefore, you need higher qualification. So this is routine and this is advanced. ठीक है? Basic है, level high. Simple words में. Next, skills required. Again, connected है. इसका स्कोप लिमिटेड है तो यू नीड लेस स्किल. इसका हाई है तो यू नीड मोर. आई गिव द एग्जांपल. खाली ग्रेजुएट बनोगे, बुक कीपिंग करोगे, आगे जाके पढ़ोगे, सो यू विल बिकम अ गुड क्वालिटी अकाउंटेंट एंड क्वालिटी फाइनेंस प्रोफेशनल. रिमेंबर, वी वांट टू बिकम अ गुड क्वालिटी अकाउंटेंट, गुड क्वालिटी फाइनेंस प्रोफेशनल. हमको रूटीन जॉब नहीं करना है. स्टार्टिंग में टू गेट एक्सपीरियंस इफ यू डू इट्स फाइन, but आगे जाके no routine. We have to do high level job. We will work hard. We will put more time for studies. We will do everything, but we will do passionately. Remember, अगर कोई भी चीज passion से करोगे ना, दिल से करोगे ना, you will get result. So keep that in mind. Accounts में score करना ही करना है, but वो जो score करेंगे FYJC का base we will take forward and we will study hard. We will make ourselves proud. We will make our parents proud. So keep that in mind. हमें सिर्फ ये नहीं करना है, एक्सपीरियंस के लिए ये भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बट आगे जाके टारगेट इज अकाउंटेंसी एंड फाइनेंसिंग प्रोफेशनल. ठीक है? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग. अगेन द सेम थिंग. यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है, जूनियर लेवल काम करते हैं, सो ज्यादा डिसीजन, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है. बट दिस इज हाई लेवल, इसमें मोर एनालिसिस करना है. सो देयरफॉर यहाँ पे वी टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस. इन शॉर्ट, यहाँ पे बेसिक रूटीन डिसीजंस वी हैव टू टेक, बट यहाँ पे वी हैव टू टेक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट डिसीजंस. ठीक है? बेसिक डिसीजंस, क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन. कीप दैट इन माइंड. अगर वो वर्ड समझ में नहीं आया चलेगा, मैं जो बोल रहा हूँ कीप दैट इन माइंड. इट इज मोर देन इनफ. You are not going to get any question on distinction between bookkeeping and accountancy. It will be framed in the form of objective. Okay, I have told you this many times. And the last point, principles. Now, what do you mean by principle? Second chapter में you have a separate section, accounting concept, that is principle only. Principle मतलब what? There are certain rules. अभी कैसे बोलते हैं ना यार, अभी सबके उधर कोविड है, तो every society has their SOP. SOP मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. अभी कोई नहीं बोलते, सोसाइटी वाले बोलते हैं बाहर वाले को अलाउड नहीं है, जो भी आएगा इमरजेंसी वाले, खाली दूध वाले को अलाउ करो, पेपर वाले को अलाउ करो, जो भी आएगा मास्क पहन के आएगा. ऑल दीज आर प्रोसीजर्स. तो हर एक सोसाइटी का अपना अपना प्रोसीजर होता है. सेम वे देयर इज अकाउंटिंग प्रोसीजर. सो व्हेन यू डू बुक कीपिंग, सर्टेन प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी फॉलोड. बुक कीपिंग में ऑल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. But when I go for accountancy, I have to follow each and every procedure. When I go for accountancy,
I have to follow each and every procedure. Therefore, if you see, bookkeeping requires only basic knowledge of journal and ledger, whereas accounting requires all accounting principles. Principle मतलब customs और rules जिसके basis पे we prepare accounts. आगे जाके there are rules which we will see after 2-3 days. 2 दिन के बाद वो आएगा accounting concept, that is rules. So bookkeeping में you need to know limited rules of accounting, whereas accountancy में I need high level of rules, more level of rules. In short, I have to cover each and every principle of accountancy and see to it that there is nothing is left out. In short, to summarize everything, this is basic level and this is advanced level. If you read the points carefully, more or less if you see, हर एक point का interaction है, it is interrelated with each other. So in short, bookkeeping comes first, accountancy follows bookkeeping. Without bookkeeping, accountancy cannot be done. This is a narrow concept, this is more wider concept. Okay with this? Okay? So this was the third page, bookkeeping and accountancy. Now next page, very interesting part, basis of accounting. Now what I'm doing, I don't want to extend the video much. So what I'm doing, I'm stopping here. The fourth page का explanation, I'm taking it in the next video. Okay? I'll do like that only every day, around half an hour के 2 videos I'll keep on sending. So uploading में भी time नहीं लगेगा, and you all also can study step by step. ठीक है? So I'm just cutting this video. The next part is coming in the next video.